Hello students, welcome to our channel SGTN's online tutorials. Now students, एक धमाका कर दिया है CBSE ने for standard 10th and 12th. Well, it's a new concept that CBSE has come up with. और ये न्यू कंसेप्ट ये है कि जो CBSE की एग्जाम्स, जो 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम्स साल के एंड में मार्च अप्रैल में हुआ करती थी, now for this year 21-22 the CBSE has decided that your exams will be divided into two parts, part 1 part 2, या आप बोल सकते हो term 1 term 2. yes, you heard it right. दो बार आपको बोर्ड का एग्जाम्स देना है. term 1, as you can see, it will have 50% of your syllabus and term 2 will have 50% of your syllabus. So अगर आप सिलेबस की बात करें, so the pressure on the students will be reduced because in term 1 they will have to prepare 50% and term 2 they will have to prepare only 50%. Now term 1 syllabus only 50% and the question paper will be MCQ based. Complete question paper will be MCQ based. It will be a 90-minute paper and you have to complete the paper on an OMR sheet that will be given to you. So objective based paper, और students objective based paper में वही student अच्छा को score कर सकता है जिसके concepts clear हो. The one who has read textbooks thoroughly well, the topics are thoroughly well prepared. What about term 2? Term 2 again 50% syllabus. This will be held in the month of April. This will not be MCQ based, it will be a subjective based question paper. मतलब इसमें लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस, आपको केस स्टडी करके आंसर्स लिखने हैं. मींस इट विल बी अ सब्जेक्टिव एंड टर्म 1 विल बी ऑब्जेक्टिव. बट वन पॉइंट हैज बीन मेड वेरी क्लियर बाय द CBSE बोर्ड इज इफ देयर इज अ राइज इन कोरोना केसेस, अगर कोरोना के केसेस काफी बढ़ जाते हैं तो टर्म 2 को भी वो MCQ बेस्ड कर देंगे. सो फोकस ये रखना है दैट यू हैव टू फोकस मोर ऑन MCQs. फोकस दैट यू हैव टू फोकस मोर ऑन MCQs. यस, वन मोर पॉइंट स्टूडेंट्स, द CBSE हैज मेड इट वेरी क्लियर कि इंटरनल असेसमेंट पे ज्यादा स्ट्रेस देना है. मींस इंटरनल असेसमेंट मतलब आपके पीरियोडिक टेस्ट्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके लिसनिंग एक्टिविटीज, रीडिंग एक्टिविटीज, योर साइंस प्रोजेक्ट्स, सो एवरीथिंग दैट यू गेट फ्रॉम स्कूल्स, योर सबमिशंस, सो दिस विल मेक अ मेजर इम्पैक्ट ऑन योर रिजल्ट्स. So please make sure that you are completing all your projects, you are giving your periodic tests very well. And the most important thing is कि जो हमारा subjective based study था, अब उसको हमें चेंज करके it has to be MCQ based. And for the MCQ based studies, concept clarity is most important. So I hope it's very clear that for CBSE 10th and 12th, now the board exams will be conducted into two parts. जुलाई एंड तक ये पता चल जाएगा कि 50% सिलेबस टर्म 1 में क्या होगा, टर्म 2 में क्या होगा. टर्म 1 will be online, offline, स्कूल में होगा. And yes, it has been mentioned in the CBSE website that external teachers, means suppose अगर आपके स्कूल में होता है तो some teachers from other schools will come as supervisors or as invigilators. And term 2 is not yet clear. It has been cleared that it will be in different centers, but that depends again on the pandemic. So I think the things are very clear. So start working from now onwards. It's July and the first board exams is coming up in the month of November. It's never too late. Just keep working hard, keep practicing, and you will do your best. Thank you.